अगर बाहर से देखें अपन किडनी तो कैसी होती है, कल पढ़ा था अपन लोगों ने, कैसा होगा, बीन शेप्ड। बीन के लिए क्या बोल देते हैं अपन, किडनी शेप्ड। सो इट इज बीन शेप्ड। ये जो आपका आउटर पोर्शन है इसका, किडनी कैसे रखी होती है, यहाँ पे रखी हुई होगी। सो दिस इज आउटर पोर्शन, दैट इज लेटरल पोर्शन, और दिस वन इज मीडियल। इस साइड को लेटरल बोलते हैं अपनी बॉडी में, और इस साइड को क्या बोलते हैं, मीडियल। सो ये जो आउटर पोर्शन है किडनी का, दैट आउटर पोर्शन इज कैसा दिखता है, कॉन्वेक्स, whereas this medial portion is concave, and this concave portion of kidney, ये जो आपको नजर आ रहा है मीडियल साइड में जो concave बना हुआ है, क्या बोलते हैं इसे अपन, we called it hilus or hilum. It is known as hilum of kidney. किसी भी ऑर्गन का वो पोर्शन जहां से उसमें चीजें अंदर जाती है और बाहर आती है, उसे अपन क्या बोलते हैं, हाइलम. सो द मीडियल पोर्शन, दैट इज कॉन्केव पोर्शन ऑफ किडनी, इज हाइलस और हाइलम. आर्टरी एंड नर्व्स enter through this portion. Artery and nerves enter through this portion, whereas vein and ureter exit through this hilus. तो दो चीजें एंटर करती है, जो चीजें एंटर करती है उसे बोलते हैं अपन आर्टरी एंड नर्व्स, और जो चीज उससे लिव करती है, एग्जिट आउट होती है, दैट इज वेन एंड यूरेटर. नाउ वेयर किडनी इज सिचुएटेड, सो किडनी इज सिचुएटेड इन एब्डोमिनल रीजन. Kidney is situated in abdominal region. यहाँ का जो पोर्शन होता है उसे अपन क्या बोलते हैं, एब्डोमेन, है ना. तो इट इज सिचुएटेड इन एब्डोमिनल रीजन बिहाइंड पेरिटोनियम. एक लेयर होती है अपनी बॉडी के अंदर, उस लेयर के क्या होती है, किडनी पीछे होती है ना, दैट इज नोन एज पेरिटोनियल लेयर. So it is situated in abdominal region behind the peritoneum. जब कोई चीज किसी के पीछे होती है तो अपन उसे क्या बोलते हैं, जनरली we use a term, behind की जगह we can also use a term. It is a retroperitoneal organ. Retro का मतलब it is behind. So it is retroperitoneal organ situated in abdomen. It is extended from T12 to L3, that is last thoracic vertebra to third lumbar vertebra. Last thoracic vertebrae to third lumbar vertebra. According to your book, its length is 10 to 12 centimeter
width is 5 to 7 centimeter. Thickness is 2 to 3 centimeter and weight is 122 170 ग्राम. ये टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है ना, इसलिए याद कर लेने. So length is 10 to 12 centimeter, width is 5 to 7 centimeter, thickness is 2 to 3 centimeter and weight is 122 170 gram. Now this kidney is surrounded by a very tough fibrous capsule. Surrounded by tough fibrous capsule, also known as, जो भी चीज किडनी से रिलेटेड होती है उसे अपन क्या बोलते हैं? renal. Therefore it is known as renal capsule. Now in our body, if something is surrounded by a tough capsule and if inflammation takes place, then there is a pain during that inflammation. अगर किडनी में कुछ भी हो जाता है ना, अपन को कुछ भी, तो वो किडनी की साइज थोड़ी सी भी बड़ी होती है ना, तो बहुत ज्यादा क्या होता है? एब्डोमिनल पेन. Clear? It is because of this tough capsule. Now this tough capsule is then surrounded by किससे सराउंड होगा? Now renal capsule is a part of kidney. अब इसके ऊपर जो भी है, that is an extra covering, that is not a part of kidney. Clear? Now it is surrounded by a fatty layer. It is surrounded by fatty layer. तो पूरा फैट का इसके ऊपर कवरिंग होता है. And after this fatty layer, again the next layer is present, and this next layer is known as renal fascia. This next layer is known as renal fascia. And what is the function of this renal fascia? This renal fascia is to hold kidney at its place. और एक्चुअल में ये क्या करने के काम आती है? जो रिनल फेशिया होती है वो किडनी को पीछे जोड़ देती है ना, फ्रॉम इट्स वर्टिब्रल कॉलम. तो दोनों तरफ जो वर्टिब्रल कॉलम होते हैं उनसे ले जाके किडनी को ये क्या कर देती है? अटैचमेंट दे देती है. इसलिए किडनी अपनी जगह पे क्या होती है? फिक्स्ड. क्लियर? सो दे आर सराउंडेड बाय रिनल फेशिया. तो सबसे इंपॉर्टेंट इज रेनल कैप्सूल, जिसके बारे में आता है. इट इज सराउंडेड बाय टफ कैप्सूल, दैट इज रेनल कैप्सूल. So this is about outer part of kidney. रब करो. करो. अब अगर अपन किडनी को क्या करें? लॉन्गिट्यूडनली कट कर दें, मतलब अपन उसका क्या लेना है? लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन. तो कैसा होगा? किडनी का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन. नाउ सपोज दिस इज द किडनी
ऐसे अगर अपन उसे काटेंगे तो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, ऐसे काटेंगे तो इट इज ट्रांसवर्स सेक्शन. सो एलएस ऑफ किडनी. अच्छा, एक पोजीशन का भी लिख देना उससे पहले. द राइट किडनी इज प्लेस्ड स्लाइटली लोअर देन लेफ्ट किडनी. द राइट किडनी इज प्लेस्ड slightly lower than left kidney because of the presence of the right kidney is placed slightly lower than left kidney because of the presence of liver on right hand side. The right kidney is placed slightly lower than left kidney because of presence of liver on right hand side. Clear? तो इसके जस्ट किडनी के ऊपर लीवर रखा होता है. लीवर की वजह से ये किडनी कहाँ रह जाती है, थोड़ी सी नीचे. तो राइट किडनी थोड़ी सी कहां पे होगी, स्लाइटली लोअर. वेयर एज द लेफ्ट किडनी इज नियरर टू द मीडियल लाइन ऑफ बॉडी. लेफ्ट किडनी इज मोर नियरर टू द मीडियल लाइन ऑफ बॉडी. लेफ्ट किडनी इज मोर नियरर टू द मीडियल लाइन ऑफ बॉडी इन कंपैरिजन टू राइट किडनी. मतलब क्या डिफरेंस हुआ, जो लेफ्ट किडनी है वो थोड़ी सी नीचे होती है और राइट किडनी थोड़ी सी बीच की तरफ होती है. इट इज नियरर टू द मीडियल लाइन. ना, मीडियल लाइन का मतलब सेंटर. तो सेंटर के दोनों तरफ ऐसे किडनी होगी. ये किडनी थोड़ी सी नीचे और ये किडनी थोड़ी सी पास में, ऐसे. क्लियर? नाउ इफ वी सी द लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ किडनी, कैसा अपीयर होता है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन के अंदर. द टू पार्ट्स विजिबल विद द हेल्प ऑफ नेकेड आई. सपोज मैंने किडनी को कट कर दिया, मेरी आंखों से देख रहा हूं, कोई माइक्रोस्कोप की रिक्वायरमेंट नहीं है. आपको दो पोर्शन नजर आएंगे, वन इज आउटर पोर्शन एंड अदर वन इज इनर पोर्शन. क्लियर? जो आपको आउटर पोर्शन नजर आएगा, दैट आउटर पोर्शन इज, कैसे पता चलेगा आपको, कैसा दिखेगा आउटर पोर्शन? इट अपीयर्स डार्कर इन कलर. क्लियर? सो आउटर पोर्शन अपीयर डार्कर इन कलर. And this outer portion which is appear darker in color is known as cortex. Whereas inner portion which appear lighter in color, inner portion which appear lighter in color is known as medulla. Now the same cortex and medulla term is used at four places in our body. One in brain, second in adrenal gland, third in lymph nodes, and fourth in kidney. Clear? In brain, adrenal gland, lymph nodes and kidney, the outer portion is known as cortex and the inner portion is known as medulla. Now how medulla is appear? तो अपन को medulla कैसा दिखेगा? ये जो अपन को दिख रहे हैं, कैसे दिख रहे हैं? These are conical structure. These are conical structure. और ये जो conical structure है, ये अपन को कैसे नजर आ रहे हैं अगर एक्चुअल में देखने जाए तो अपन, जो इनका बेस है वो किधर है आपका, ऊपर की तरफ ब्रॉड और नीचे की तरफ कैसा है, ये नैरो. क्लियर? सो ब्रॉड बेस एंड नैरो एपेक्स. एपेक्स किस तरफ है? टुवर्ड्स कॉनकेव साइड, एंड बेस किधर है? टुवर्ड्स कॉन्वेक्स साइड. क्लियर? ये जो इनका नैरो एपेक्स है,
This narrow apex portion is known as, कैसा दिख रहा है ये, थोड़ा सा एलिवेटेड दिख रहा है अपन को, यहाँ से एंड पोर्शन थोड़ा सा एलिवेटेड दिख रहा है, और जो एलिवेटेड पोर्शन होता है उसको अपनी बॉडी में अपन क्या बोलते हैं, पेपिला. दिस portion of or the apex of this conical structure is known as renal papilla. This conical portion, apex of conical portion is known as renal papilla, and these conical structures are known as renal pyramids. These conical structures are known as renal pyramids. तो ये जितने भी आपको कॉनिकल स्ट्रक्चर दिखेंगे वो सब क्या है, आपके रिनल पिरामिड्स. क्लियर? द कॉनिकल स्ट्रक्चर इज नोन एज रिनल पिरामिड्स. रिनल पिरामिड्स. Their number vary from 8 to 18. Their number vary from 8 to 18. Renal pyramids. Their number vary from 8 to 18. In case of rabbit's kidney, the number of renal pyramid is only 1. अब ये अगर अपन को ऐसे देखने जाए तो कैसा दिख रहा है एक्चुअल में, ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाले सारे पोर्शन जनरली कौन सा है आपका, लाइटर पोर्शन. ऐसा नजर आ रहा है ये, दिस लाइटर पोर्शन इज इन्वेजिनेट इन कॉर्टेक्स. सो दिस मेड्युलरी पिरामिड और कॉनिकल स्ट्रक्चर इज अपीयर्स टू बी इन्वेजिनेट इन कॉर्टेक्स. तो ऐसा दिख रहा है. कौन इन्वेजिनेट हो गया, द पार्ट ऑफ मेड्यूला विच इज इन्वेजिनेट इन कॉर्टेक्स. देयरफॉर दे आर आल्सो नोन एज मेड्यूलरी पिरामिड्स. और क्या बोल सकते हैं अपन इन्हें, मेड्यूलरी पिरामिड. सो व्हाट इज पिरामिड? पिरामिड इज एक्चुअली द पार्ट ऑफ मेड्यूला विच इन्वेजिनेट इन कॉर्टेक्स. It is the part of medulla which invaginate in cortex. So they are also known as medullary pyramids. अब अगर इसके बीच में देखने जाए अपन, यहां से आपके पिरामिड इन्वेजिनेट कर रहे हैं, तो वहां से कौन इन्वेजिनेट कर रहा है, ये जो बीच वाली जगह, दिस पोर्शन, द कॉर्टेक्स इज इन्वेजिनेट इन मेड्यूला. क्लियर? सो ये वाले पोर्शन को अगर अपन अलग से देखें, ये वाला जो बीच वाला पोर्शन है, इस बीच वाले पोर्शन की बात कर रहा हूं मैं. This is actually the part of cortex which is invaginate in medulla, and this portion is known as, this is a part of cortex invaginate in medulla. ऐसा appear हो रहा है. It appears like part of cortex invaginate in medulla, and it is known as renal column of Bertini. This is known as renal column of Bertini. This is known as renal column of Bertini. Renal column of Bertini. Now the place where the renal papilla opens, वो प्लेस जहां पे renal papilla ओपन होते हैं उसे अपन क्या बोलते हैं, the place where renal papilla opens is known as minor calyx. The place where renal papilla open is known as minor calyx. Place where renal papilla open is known as minor calyx.
and when two or three minor calyx unite together, यहाँ पे भी ये minor calyx, ये minor, they open into a part which is known as major calyx. They open or they unite to form, minor calyx unite to form a major calyx, and these major calyx are then opening. This portion is known as renal pelvis. So minor calyx unite to form a major calyx, and major calyx unite to form a, or major calyx open into renal pelvis. So they are again 7 to 13 minor calyx. Major calyx are 2 to 3 only. So generally the number of major calyxes are 2 to 3. Number of minor calyx are 7 to 13. क्लियर? तो बाहर वाले पोर्शन को क्या बोलते हैं अपन? कॉर्टेक्स. बीच वाले पोर्शन को क्या बोलते हैं? मेड्यूला. मेड्यूला का वो पार्ट जो कॉर्टेक्स में जा रहा है दैट इज नोन एज मेड्यूलरी पिरामिड और रीनल पिरामिड. कॉर्टेक्स का वो पार्ट जो मेड्यूला के अंदर आ रहा है दैट इज रीनल कॉलम ऑफ बर्टिनी. जहां पे रीनल पिरामिड ओपन हो रहे हैं दैट पोर्शन इज नोन एज रीनल पेपिला. At the level of renal papilla, the present is minor calyx. Minor calyx unite together to form a major calyx, and major calyx open in renal pelvis. Clear? और ये जो major calyx है, they are 2 to 3 in number. Clear? अब actual में ये है क्या? है ना? कैसे बना ये? तो suppose अगर अपन इसमें से किसी एक पोर्शन को मैं यहाँ से रब करता हूँ, ये देखो actual में कैसा है. What is the structural and functional unit of kidney? Nephrons, है ना? कैसे होते हैं nephrons? Suppose मैंने यहाँ से nephron बनाना चालू किया है ना? This is Bowman's capsule. Bowman's capsule से निकल के क्या आएगा? PCT, proximal convoluted tubule. After proximal convoluted tubule, there is a loop of Henle, है ना? ये आपका Bowman's capsule. This is proximal convoluted tubule. This one is loop of Henle. Loop of Henle से निकल के वापस क्या आएगा आपका? Distal convoluted tubule. Clear? है ना? Distal convoluted tubule then forms या opening collecting duct. Clear? ऐसे जाके ओपन हो जाए collecting duct के अंदर distal tubule. ठीक है? ये जो आपका बीच वाला पोर्शन है जिसको मैंने क्या बोला? Renal column of Burdini. यहां पे कैसा होता है? ये मेरी आर्टरी है, रीनल आर्टरी. नाउ रीनल आर्टरी इज डिवाइडेड इनटू ब्रांचेस, है ना? रीनल आर्टरी में किस में डिवाइड हो गई? ये मेरी ब्रांचेस. अब आउट ऑफ दिस एक ब्रांच जाके किस में चली गई? रीनल कॉलम ऑफ बर्टिनी. क्लियर? ये ब्रांच आगे जाके किस में कन्वर्ट हो गई? इसका एक ब्रांच निकला and that branch is known as efferent arteriole. Now this afferent arteriole, जो आपका afferent arteriole निकला वो गया और उसने क्या बना दिया? glomerulus. glomerulus बनाने के बाद वो वापस बाहर निकला in form of efferent arteriole. clear? efferent arteriole के बाद वापस उसने क्या बनाया इसके आसपास? पेरिटिकुलर नेटवर्क. और पेरिटिकुलर नेटवर्क बनाने के बाद वो किस में कन्वर्ट